हाय, लेट अस डू द केस ऑफ बोरोअर। वैसे तो बोरोअर का केस जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया लेंडर का, उससे पोलर ऑपोजिट है। बट आई वांटेड टू टेक अ मोमेंट एंड एक्सप्लेन दिस अगेन सो दैट देर इज़ नो कन्फ्यूजन। ठीक है, सो पहली बात तो ये है कि हमारा देर आर टू थिंग्स दैट वी डू। द फर्स्ट इज वी वांट टू अंडरस्टैंड वेदर कंज्यूमर इज वर्स ऑफ or better off by figuring out whether he remains a net lender or a borrower in a situation. ये तो हमारे ही first thing. The second thing we also want to do is we want to understand from substitution and income effect whether his consumption is going to increase or decrease. ठीक है, कंजम्पशन अगर उसकी इंक्रीज कर भी जाती है doesn't make him a borrower. कंजम्पशन इंक्रीज करने का मतलब है कि जब वो ई नॉट पे कंज्यूम कर रहा है उससे उसकी कंजम्पशन को क्या हो रहा है, बढ़ रही है या कम हो रही है. सो एक्चुअली इफ यू लुक एट इट दीज टू आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. और हम लोगों ने एंडाउमेंट में ये दोनों करे हैं. हम लोगों ने ये केस करा था जब हमने एंडाउमेंट का चैप्टर शुरू किया था और हम लोगों ने नेट बायर की बात करी कि तो वो नेट बायर है तो वो नेट बायर रहेगा, नेट सेलर बनेगा एक्सेट्रा. और ये हमने बात करी थी लेबर सप्लाई के अंदर. So actually we are not doing any other new thing, we are just repeating the same analysis except that instead of saying buyer and seller or labor supply, we're talking about lender and borrower. So let's take the first case. हमारी बजट लाइन ये है, हमारी एंडाउमेंट ये है, गिवन है. ठीक है, ये है M1, ये है M2. For him to be a borrower, he has to consume more than he was consuming, more than what he's earning today. So if he's consuming at E0, C1 is more than M1, which implies that this person is a net borrower. This person is a net borrower. Now let's say rate of interest falls. When rate of interest falls, then what happens? ये वाला पॉइंट था हमारा M1 प्लस M2 अपॉन 1 प्लस R. R फॉल कर रहा है मतलब डिनोमिनेटर फॉल कर रहा है, मतलब ये वो होल पोर्शन इंक्रीज कर रहा है, विच इज़ वाई माई बजट लाइन स्विंडल्स लाइक दिस. ठीक है, तो हम जो फर्स्ट केस है वर्स ऑफ बेटर ऑफ लेंडर बोरोअर उसका हम एनालिसिस करें. जब वो बजट लाइन ए बी पे था तब वो ई नॉट कंज्यूम कर रहा था. He had revealed his preference for E naught, so E naught was more preferable to him than any other point on AB. Now that he's moved to A1 B1, then A1 B1 पे वो A1 ओमेगा पे तो कंज्यूम करेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो पॉइंट्स तो उसके पास पहले भी अवेलेबल थे और वो पहले भी रिजेक्ट कर चुका है. अब उसके पास जो न्यू पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं ओमेगा B1 पे. तो E1 जो है, E1 will lie between omega B1. The moment you say this, you're saying two things. One, he will remain a net borrower. When he remains a net borrower, he will definitely be better off. So this answers my first point. He's worse off or better off? Better off. He goes to switches to being net lender or becomes or remains a net borrower. He remains a net borrower. ठीक है, ये तो हुई मेरी पहली चीज. अब दूसरी चीज क्या है, E नॉट पे C1 is this. Now I want to understand whether C1 will increase or decrease or remain the same, which means C1 can be here, but E1 1 can be at 1, E1 can be at 2, E1 can be at 3. So इन तीनों possibilities में से E1 lie कहाँ करेगा, उसके लिए हम क्या स्टडी करते हैं, substitution effect और income effect. By when the rate of interest falls, then the opportunity cost of consumption today is falling. The opportunity cost of C1 is falling, है ना. अब मैं अगर कंज्यूम करती भी हूँ तो जो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लूज कर रही हूँ वो कम है. So when the rate of interest falls, the opportunity cost of consumption today has fallen. When the opportunity cost of consumption today has fallen, that means he is going to consume more. So according to substitution effect, वो ज़्यादा consume करेगा. ठीक है, अब क्या हुआ, income effect. By saving the same amount of money as before, you see this is the same language I used in labor supply. वहाँ पे हमने बोला था by working the same number of hours, यहाँ पे हम बोल रहे हैं by saving the same amount of money. By saving the same amount of money as before, he is now earning less.
पहले 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो वो 100 रुपये पे 10 रुपये कमा रहा था. अब 10% की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रह गया तो वो 100 रुपये पे सिर्फ 6 रुपये कमा रहा है ना. सो बाय सेविंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज बिफोर ही इज नाउ अर्निंग लेस. When you earn less, you reduce your consumption for normal goods. So C1 also falls and C2 also falls, except that we don't have to look at it. We only look at things in terms of C1. So अगर substitution effect stronger है तो C1 बढ़ जाएगा, which is going to be E1 3. अगर income effect stronger है तो इससे consumption कम हो जाएगा, which is at 2. अगर दोनों same है तो E1 पे आ जाएगा, where there is no change in C1. So I hope that made sense. Similar analysis हम करेंगे जब rate of interest बढ़ जाता है. So again, what is happening? He is a net borrower. So E0 is here, and the rate of interest increases. Rate of interest rises. Sorry, rate of interest rises. So we move from AB to A1, B1. We move from AB to A1, B1. So initially मैं कहाँ पे हूँ? AB पे. जब मैंने AB पे कंज्यूम किया तो मैंने E0 पे कंज्यूम किया. अब मैं A1 B1 पे आ गई तो E0 तो अफोर्डेबल ही नहीं है. अगर अब E0 अफोर्डेबल ही नहीं है तो मैं एनालिसिस क्या लगाऊं? मैं कोई एनालिसिस नहीं लगा सकती. मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि if initially the consumer is a net borrower, which we can see he is, then when rate of interest increases, he has two options. Either to remain a net borrower. If he does, then his point will lie on omega B1. His point will lie on omega B1. He will definitely be worse off. Because there is no way you can make an IC which is going to be higher than E0 IC and tangential to omega B1. दूसरा तरीका है कि वो नेट लेंडर बन सकता है. जब वो नेट लेंडर बनेगा तो क्या होगा? नेट लेंडर के हमारे पास केसेस होते हैं. नेट लेंडर के केस में हमारे आईसीज ऐसे हो सकते हैं. इन विच केस ही इज बेटर ऑफ. नेट लेंडर के केस में हमारे आईसीज ऐसे भी हो सकते हैं. In which case he is worse off. And the third possibility is of him being indifferent, in which case our ICs are like this. So in which he is indifferent. So ये तो हमारा आंसर हुआ ये वाला केस, ये वाला क्वेश्चन पहला. अब दूसरे पे आते हैं. When rate of interest increases, the substitution effect says that the opportunity cost of C1 has increased, so C1 should fall. Income effect says by saving the same amount of money as before, he's now earning more. If I have more money, I consume more of normal good. Again, हमें ये नहीं पता कि C1 जो है वो rise करेगा. So अभी I have this C1, वो rise करेगा यहाँ पे आएगा कि fall करेगा. Fall करेगा तो कहीं पे भी जा सकता है. तो हमें ये नहीं पता कि हमारा C1 राइज करेगा या फॉल करेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा इफेक्ट किस केस में स्ट्रॉन्गर होगा. दैट इज व्हाई वी कैन नॉट से वेदर देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज इन C1 और नॉट, एंड वी इन दिस केस कैन नॉट इवन से वेदर ही विल रिमेन अ नेट बोरोवर और बिकम अ नेट लेंडर, बट वी कैन शो ऑल दीज केसेस. सो आई होप दिस थ्योरी इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फ्लेशन और टैक्स रेट्स करेंगे, which is also a very interesting one for us to do, and then we will proceed with the chapter in that manner. All right, thank you.